Good evening. Welcome to KACS IAS. Today, I'm going to take some of the current affairs which will be very helpful in your OS main exam. Okay. So, କିଛି ଜିନିଷ discussion କରିଦେବା କିଛି ଜିନିଷ hot topic ଅଛି जोटा कि news रे थिला so that we can on the light ପକାନ୍ତି. I will try to make sure that you get some new points. Validation ହେଇଯିବ. I know you all are writing the paper. ଯେହେତୁ prelims clear କରିଛ you all are well equipped. बट मुझे चाहूँगी कि किसी आर्मर्स तुम ऐड करो ताकि किसी पॉइंट्स देवी सो दैट जदि तुम ताको फिट कर पारियो आंसर्स बी वेरी हेल्पफुल राइट. सो बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन पार्ट आई विल टेल यू दैट द जीएस हमार जो आंसर राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन चलची मेंस मॉक चलची एवरीथिंग इज देयर. हमर ऑप्शनल रिलेटेड है एग्रीकल्चर केएसआईआर अच्छा एंड मेनी अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन. So link is in the description. So before going to the first topic, yeah, already you have seen the first topic. So देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल वेस्ट बेंगल स्टेट लेवल टेस्ट गोटे जिनस है कि आम जो पढ़ी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पढ़ू ना पूर्व आमको आउट जिनस पढ़ू सेक्युलरिज्म पर डिबेट करूँ है ना. एंड पीपल से दैट in secularism if you have a debate on secularism it generates more heat. It generates heat than constructive points, right? So same here for UC topic तो जानी गलानी CC है ना. CC रे डिबेट हुए ना तो it generates more heat rather than some constructive points जोटा कि आगु काम आसीबो. But in India CC has been a very debatable point from the birth of the constitution. 1955 रे जो हिंदू कोड बिल आस्तला when there was a Hindu code bill in 1955 ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜवाहरलाल नेहरू ର गवर्नमेंट ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ. at that time ଆମର ଯେତେବେଳେ at that time ସେତେ क्वेश्चन ଆସି ନଥିଲା ହିନ୍ଦୁ କୋड ବିଲ୍ ଟା କାଇଁ ଆଣିଲ କେତେ ଲସ୍ ମୁଁ କୋଡିଫାଇ କରିଲ ରାଇଟ୍. ଏତେ क्वेश्चंस ପଚାରି ନଥିଲା କାହିଁକି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଲିଟିକାଲ ଲେଜିଟିମେସି ଥିଲା. काई nobody is going to question the freedom fighters. काई most of the parliamentarians at that 1950s and 60s were freedom fighters है ना. even supreme court भी backseat जाउतला. आमे जानि तबा गोलकनाथ case was the first turning point against the parliamentarians. that too then in 1967 till 1967 66 nobody was going to object any parliamentary decisions taken in the parliament. किसी भी बिल आनो किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस आनो से टाइम रे पास हे ही जाउथला बिकॉज़ और अच्छा है ना कोन दिन फ्रीडम फाइटर्स सेतरो रूल माने सेतरो पार्लियामेंट रे बसले तो से टाइम रे एटा के हिंदू कोड बिल के चैलेंज में हे पलानी. मेनी ऑफ द कोड बिल्स वेर कोन कोडिफाइड हे जेतला हिंदूस भाई. बट एट द सेम टाइम मुस्लिम जो बिल मुस्लिम रा जो तांको पर्सनल लॉस अछि दैट इज गवर्न थ्रू द शरियास. 1937 रे बहुत सारा लॉ आसला एंड दैट इज रन अकॉर्डिंग टू द देयर ओन पर्सनल लॉस. बट हाँ एठी कौन थला यूसीसी जो आसे ना पीपल यूज टू से दैट हमको यूनिफाई करिया पड़िबो है ना. वी नीड टू यूनिफाई देम राइट. यस है ना. when we need to unify them ना कहीं गोटे कंट्री अछि तो वी नीड यूनिफॉर्मिटी इन लॉस. प्रॉब्लम हैला तो गोटे सपोज गोटे हिंदू रो केस जदी जाउची कोर्ट को जाउची या मुस्लिम रो केस कोर्ट को जाउची ना तो एटा के कहू ना जज हैज टू टेक सो मच स्ट्रेस काहे कि यूनिफाइड सिविल लॉ नहीं राइट. बट हाँ जो मर्डर केस होचे तुम जान रेलेवेंट आईपीसी सेक्शन एबे बीएनएस हेगलानी से धारा रे तुम ताको कन्विक्ट करछो. बट यूनिफॉर्म जो मैरिज आछी डिबेट आछी कोन इनहेरिटेंस आछी एडॉप्शंस आछी ना से टाइम रे प्रॉब्लम हे जाउची राइट. काई प्रॉब्लम होची कि हिंदू रो अलगा लो मुस्लिम रो अलगा लो क्रिश्चियन रो अलगा लो से हिसाब रे प्रॉब्लम होची. दैट इज व्हाई देयर इज नो यूनिफाइड सिविल लॉस. हम पाखरे यूनिफाइड क्रिमिनल लॉस अछि. ओके. So before going to this, so I will tell you. See this. आमे जानी छो when we talk about this uniform civil code ना आमे एति जानी जतलो में एग्जाम रे किछि आंसर्स लिखु छ ना so we should know that what to write, what not to write and what arguable points you can provide. ठीक अछि. गोटे जिंस अछि एटा समस्त लिखिबे राइट. arguments for UCC and arguments against. ठीक अछि. See this टिके कोडिफाई करछे पॉइंट्स ओडा. why
UCC is needed. Obviously, we want gender justice, right? Thank you. Obviously, nobody is subhuman. Everybody is human. है ना? झियो हो या पुओ हो, any caste, they are human. तो गोटे जिनस है कि गोटे लोकों पे अलगा कानून आ गोटे लोकों पे अलगा कानून, I mean, it doesn't make sense. माने नॉर्मली कथा को. बट हाँ, एबे देखिए जेंडर जस्टिस कौन कहूँ व्हाई इट इज नीडेड फॉर द यूज आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूज इक्वल राइट्स इन मैरिज डिवोर्स इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस गोटे जिनस लगे गोटे केस कहबे व्हेन एक्स मुस्लिम वन ऑफ द पेटिशनर ऑफ एक्स मुस्लिम ना से कहतले कि शी वांटेड शेयर फ्रॉम हर फैमिली बट एज पर द मुस्लिम लॉ शी वाज नॉट गिवन द अमाउंट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ शेयर थैंक यू Muslim law alga coach. But she was saying that I am an ex-Muslim, so I am not bound to follow the Muslim personal law. तो एठी कौन हम ex-Muslim तो किसी क्राइटेरिया नहीं, right? तो एठी कोर्ट कौन कर परिबो? Obviously से माथा पे चिर टाइम, right? So gender justice रे कौन होची? So if you get an UCC, so marriage भितरे गोटे इक्वल क्राइटेरिया रहइबो, डिवोर्स रहइबो, इनहेरिटेंस रहइबो, मेंटेनेंस रहइबो. बुझी पारछो? आगु को मेंटेनेंस कथा भी कहबो. कहीं तापर कौन होची? Equality before law. One civil law for all citizens. Equality before law, right? Everybody is equal. And Article 14 is equality before law. So if you get one law, which is a codified similar law, that too for the civil purpose, that it will solve all the problems. And এটা কোন কইছে Article 44. Article 44 is in DPSP. ଆମର ଯେତେବେଳେ BR ଆମ୍ବେଦକର ସାହେବ କହିଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି UCC should follow a gradual process, right? एमिति की कोर्सन करिवनी, राइट? डेमोक्रेटिकली ताकू स्टेप बाय स्टेप आई मीन विथ पीपल्स कंसेंट ताकू तमे आनिबो इंडिया रे. बट प्रॉब्लम हैला कि आफ्टर द 77 इयर्स हैलानी पीपल्स कंसेंट आई मीन आसुनी, राइट? स्पेशली इन द माइनॉरिटीज ग्रुप मे बी दे थिंक दैट हमरो स्पेशल हमर जो लॉस ऊपर से इनक्रोचमेंट कर दबो भारत रो लॉस कर. सो 44 directs DPSP. National integration promotes common citizenship. These are normal points you can write. It is reduces legal complexity. Thank you. Now the court, यदि UCC pass हैगला all India level रे, court won't distinguish between Hindu woman या Hindu Muslim woman. तापे गोटे uniformity रहिबो. It can passes judgment easily, right? Reduces legal complexities. कौन? One uniform civil framework. तापरे prevent discriminatory practices like polygamy, unequal inheritances. समझ रहे हो? Thank you. In Hindus, you can marry only one. After divorce, you can marry for the second one. But there was a provision that you can marry up to 4. It भी चल जिसे practices. So कौन होची? It prevents, reduces legal, कौन prevent discriminatory practices. यदि तुम polygamy यदि करूचो, then it is gender justice. If you are marrying a 4 woman, are you doing justice to that 4 woman? Obviously, won't. मतलब अय्याशी जीवो. Most of the cases से यही था ना. तापरे strengthens constitutional morality, priorities, equal and dignity. क्योंकि UCC काहे की prefer करते हैं? Because constitution सर्व पर है, right? Without the help of constitution, country exist ही करी पड़ी. गोटे morality गोटे जिनसा था, गोटे था, गोटे public morality था, और गोटे constitutional morality था. Public morality, constitutional morality will always कौन? Constitutional morality always should be given the top priority above the public morality. Public morality कहबा कि हाँ हमें polygamy करी परिबो, right? We will do the polygamy. We will do public morality कहबा हमें polygamy करी करी. But हाँ constitutional morality कौन कहबा? Polygamy should be avoided. बुझी पारछ? Constitutional morality. काहेंगे? We are treating humans equally. चारिटा शादी करके किसी मिलिया को जाऊँ तुम. In fact, you are adding more problems in your life. काहेंगे? तुम तलाक दबो. पुणे आउट ऑफ भाव तलाक दवा आउट ऑफ भाव, राइट? तापर सिंप्लिफाइज जुडिशियल प्रोसेस, फियर कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनल लॉ. ऑब्वियसली मुस्लिम पर्सनल लॉ अलगा, हिंदू पर्सनल लॉ अलगा. सो दिस इज अ क्लियर कट ऑफ डिफरेंशिएशन. तापर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट है ना रिलीजियस फ्रीडम. ये अफेक्ट अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 कहेंगे हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जाए. तो प्रोपेगेट प्रैक्टिस ये सब जिनस रे प्रॉब्लम आसी पारे एज पर द एक्सपर्ट्स. कल्चरल डाइवर्सिटी कौन? इंडिया हैज अ लॉट ऑफ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी कौन थी है ना? इंडिया इज ऑलवेज इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. प्रॉब्लम है कि आने के लिए विल दैट डाइवर्सिटी विल एग्जिस्ट? डाइवर्सिटी ऊपर खतरा तो आसीबनी जिनस आसी. तापर फेडरल कंसर्न स्टेट्स हैव डिफरेंट सोशल रियलिटीज. ऑब्वियसली अलगा आज का डेट रे इफ यू फाइंड ना
यूसीसी ऑल इंडिया लेवल रे इम्प्लीमेंट कर उत्तराखंड तार इम्प्लीमेंट करला गुजरात तार इम्प्लीमेंट करला ऑलरेडी माने कोन गोवा रे इम्प्लीमेंट हेचे एज पर द पोर्तुगीज सिविल कोड तापर तापर एबे आसाम इम्प्लीमेंट करला तापर एबे नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल गोटे पैटर्न देखि परछि मु व्हाट द राइट विंग गवर्नमेंट्स आर इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी and the right wing governments are implementing secular principles, right? This is the pattern I'm seeing. Separate tribal customs, customary laws of scheduled tribes and need protection. That is why it is against the UCC tribal customs. कहीं हमें जानी चो आमर जो आसाम रे जो UCC अछि ना it exempts tribal बुझी पाछ 6th schedule रे तांकर सेठी UCC लागिबो नाही already like pass हेगलानी but हां it exempts the tribals बुझी पाछ fear of majoritarianism कहीं obviously minority problem हला से कि majority culture हम पर थपा जाउची that is not at all viable तापरे lack of consensus social acceptance is essential for successful implementation is it socially acceptable मु कोनी public morality कथा कहूची public morality बुझी पाछ एटी lack of consensus कोन कहूची public morality of certain communities are not allowing them to follow the UCC that's why this is having a conflict so argument for constitution UCC कोन कहबी constitutional morality को enhance करया पे arguments against UCC कोन कहबी public morality you can add this point है ना gradual reform preferred जेमती हमरो founding constitution के fathers कहतिले UCC can be implemented gradually है ना एमिति नै कि तुम तार भी example अच्छी I will tell you why it has been gradually implemented तापर one size fits all may not suit India uniformity is different from equality बुझी पाछ one size fits all ते जिंस जोडा कहूची कि एक देश एक कानून रहना चाहिए काहे कि this is good for criminal laws एटा criminal laws पे ठीक अछि but is it viable for the civil laws एटा that's a bit question mark देखो आ गोटे देखो why I will tell you माने देखो मु दीटा मॉडल आनिछि I will show you these two models why UCC have been gradually implemented as told by the founding fathers. Gujarat कोन गला Gujarat represents a anyways मु लिखि दोछि I will first go with this Assam ना Assam रे जो अछि ना Assam जो मॉडल it was a step wise implementation है ना it is a step wise implementation बुझि पाछ केमती तमे मन अछि आसाम रे 2023 रे 2023 रे कोन हेतला चाइल्ड मैरिज बैन कर देथिले अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी चाइल्ड मैरिज बैन कर जे मैरिज करछि ताके अगेंस्ट पॉक्सो लगौथिले पॉक्सो राइट पॉक्सो लगरे एटा स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशन राइट तापर आसाम कथा कहूछि तापर आ गोटा कथा सेम ईयर रे से माने कोन करले आसाम रे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अछंती आसाम रे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अछि ना दे आर बार्ड फ्रॉम हैविंग पॉलीगमी से माने पॉलीगमी से माने इम्प्लीमेंट करि माने प्रैक्टिस करि परिबेनी मोर देन 2 किड्स से माने आनि परिबे नाही बुझि पाछ तापर इवेंचुअली बुझि पाछ इवेंचुअली कोन हला यार मोर देन 2 किड्स हबो अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेमान को वेलफेयर बेनिफिट्स मिलिबो नाही बुझि पाछ एडा कोन स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशन बुझि पाछ स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशन लास्ट को 2026 रे कोन हला हां किंतु एड कोन हतला तांकर एडी आसाम सर्विसेज बिल आस्तला सर्विसेज बिल डिसिप्लिनरी जो कोनती सर्विसेज बिल 1964 को से अमेंड करला राइट ए सब धंदा पुरेले लास्ट वो आसाम रे यूसीसी आसला यूसीसी आसाम बिल आसला 2026 एडा आसला मार्च मास रे बोधे आसला राइट से माने कोन करले से माने कोन स्टेप वाइज इंप्लीमेंट करि करी एडा जस्ट ओटे पार्ट थिला और बहुत सारे जिंस इंप्लीमेंट हेचे दे जस्ट इंप्लीमेंटेड स्टेप वाइज and they implemented the bill and mind you Assam has a Muslim population of 35% as per the 2011 census so gradual implementation एमिति हुए and it was a very good example given by the Assam तापरे गुजरात कोन consultative approach काहे कि consultative approach कोंती why because तांकर जो थिले कमिटी रे चेयरमैन से रंजना देसाई I mean, she was consulting with many stakeholders. The minority community हेगला, the tribal community हेगला, so that they can reach at the consensus level. So that कोई मैंने कोई पार्टी खुश मैंने ना खुश है परिवार मुझे पता. So this was good है ना. So मु एट लिखी परिबे Assam and Gujarat has a good model.
आगुरु कोन थिला उत्तराखंड भी ऑलमोस्ट ए कंसल्टेटिव अप्रोच थिला किंतु इम्प्लीमेंटेशन रे सेति पेन देखो आसाम रे 2021 रे कोन करथिले माने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आनथिले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स माने जो मद्रसा थिले मद्रसा राइट जो गवर्नमेंट फंडेड मद्रसा थिले ताको कोन कले सेक्युलर स्कूल्स रे कन्वर्ट करले की करथिले माने हिमंत विश्व शर्मा तो एटा कोन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आछे तो यू आर गोइंग फ्रॉम कम्युनल टू सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस बुझी पाछो एटा एटा सब हेला परे जाइके से माने यूसीसी आनले द केस ऑफ आसाम इन द केस ऑफ गुजरात उत्तराखंड से माने कोन कले से माने ये कले कि नो आमे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आनिबु आमे डायरेक्ट कंसल्ट करिवु वी विल गो डाउन आमे कंसल्टेटिव अप्रोच लेके आनिबु एटा लाके स्टेप वाइज इंप्लीमेंटेशन आउट ना भी कोन आई विल शो यू this Assam represent this one you can write such words na you can write such words kono Assam represents an incremental model where the government first introduced targeted reforms and then moved towards broader civil law together this model shows that so the article 44 can be achieved through different constitutional pathways so एटा ला इंक्रीमेंटल मॉडल जोटा कि स्टेप वाइज कहतली एटा ला कि कंसल्टेटिव मॉडल व्हाई द यूसीसी हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड तो यदि एटा इंप्लीमेंट हे परछि स्टेट कैन रेस्ट ऑफ द स्टेट कैन बी इंप्लीमेंटेड प्रॉब्लम हला कि कांग्रेस गवर्नमेंट करेनी कोहंदी माने अपीसमेंट पॉलिटिक्स थाय तांकर एंड आउट कथा जेतोले 1955 रे जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट जति हिंदू कोड बिल को यूनिफाई कर देले बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल माने लेजिटिमेसी एठी कोन बीजेपी रो मैनिफेस्टो रे थाए मैनिफेस्टो से मन लिखि जंदा हम यूसीसी आनी तो इनडायरेक्टली दे हैव टोल्ड दैट वी विल ब्रिंग यूसीसी तो कोन इलेक्टोरल लेजिटिमेसी भी पाइले ताको मैनिफेस्टो रो भी थिला एंड दे आर ब्रिंगिंग दैट तो सेटा गोटा पॉइंट्स अछि व्हाई एते हल्ला हुएनी बुझि पारछ तो व्हाइल राइटिंग ना तो यू हैव टू यू मेंशन ऑल दिस एग्जांपल्स आसाम केमित करला के कोन कोन लॉस रिपील करला तांकर सर्विसेज बिल को से एनाक्ट करले धीरे धीरे कोन इंक्रीमेंटल मॉडल नेक्री अप्रोच करिके से माने कोन टारगेट सेट करले एंड दे हैव कोन यूसीसी इंप्लीमेंट करले नाउ द नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल रे ड्राफ्ट तमे पढिबो है ना टिके पढि के जीवो तांकर जे कमिटी अछि टिके देखिबो से कोन कोन कहउछन्ते आगु तापर कोन अछि आमे जानछो पुनी गोवा रे कोन पोर्तुगीज सिविल कोटा अप्लाई होउछि 7 रो एंड सेटी यूसीसी इंप्लीमेंट होछि so it is about gradual steps and these two governments these states have shown how to implement right anyways so I have a question है ना तो मैं try to attempt this question article 44 of the constitution represents an aspirational rather than an obligation एटी कोन I mean what are the constitutional makers thoughts कोन थला है ना you can write 2 to 3 points बी.आर. अंबेडकर साहब कोन कहितले या के मुंशी कोन कहउतले राइट से माने कोन कहतले के मुंशी तो कहतले कि यूसीसी इज वेरी नेसेसरी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रैक्टिकल चैलेंज इन इंप्लीमेंटिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड चैलेंज अछि एंड चैलेंज को केमिति चैलेंज भी मेंशन करिवो कोन कोन चैलेंज आर्गुमेंट्स इन फेवर बुझि परछो तो क्वेश्चन एमिति कोछि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस बट हां ताको ओवरकम करिके 2 and 3 states have implemented तो सेडा भी लिखि परिबो राइट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन मते लागिला कि इट्स इंपोर्टेंट अछि कि यूसीसी वेस्ट बंगाल हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट इट कैन हैव ए क्वेश्चन आसी परिबो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एडा एबे रिसेंटली सेलिब्रेट हेतला एडा 1946 रॉयल नेवी रिवॉर्ड solidarity amid sharpening polarization कोटे जिंस होला कि 80 years of celebration recently हिच ओके सेलिब्रेशन इन सेंस कोन एकेडमिकल डिबेट चलतला इतना कि गवर्नमेंट तो सेलिब्रेट करतला बट एकेडमिकली हेगला या तमे जर्नलिज्म रे फील्ड रे हेगला ई सब जिंस पर चर्चा चलतला काहे आगुरु 2014 ने 15 रे रॉयल नेवी रिवॉर्ड ऊपर म्यूटिनी ऊपर क्वेश्चन आगुरु आसी जाइछ so there might be a chance that they can issue such questions in your GS exam, right? Anyways, let's move on.
देखो एटा थिला कि why the mutiny happened है ना गोटे जिनस होला कि when you read such questions ना try to गोटे जिनस होला कि try to follow the process 1946 रे mutiny हेतला बट गोटे जिनस होला कि क्लेमेंट एटली है ना क्लेमेंट एटली when he came into India in 1956 right से कौन कहला जानछो it was not because of the Quit India movement British left. It was because of the Royal Indian Navy mutiny in 1947, which led to the departure of British from India. गोटे जिनस थिला कि this एटा थिला गोटे क्वेश्चन थिला in what ways did the naval mutiny prove to be the last nail in the coffin of British colonial aspirations in India? First, see this. एटा थिला this is 2014 रे इमता क्वेश्चन पचार छन. So there might be a chance that they can ask such questions in this upcoming exams, right? See this. गोटे जिनस होला कि आमे जानिछु जेतले हमर 1939 रे 39 रो प्रॉब्लम स्टार्ट हेगला काहे कि 1939 रो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हेतला एंड वी नो द थ्री मेन पिलर्स कोन थिला why British was ruling India the what was the three main pillars गोटे होला कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना इकोनॉमिक सिक्योरिटी तापरे मिलिटरी कंट्रोल राइट तापरे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी three main pillars why the British India was ruling us for 200 years है ना main pillars ला economic security military control and political legitimacy गोटे जिनस ला कि नेवल म्यूटिनी तो लास्ट को हैला बट हां हमें एटा कहि परिबा कि जेमती क्लेमेंट एटली कहले कि because of Royal Navy left but actually I think it's a amalgamation of many of the facts we am kon करे uh, we have to throw some light what kind of events were happening before navy mutiny ठीक पता मु जानि छी 1939 रे 1939 रे 1945 कोन थिला वर्ल्ड वॉर 2 राइट एठी प्रॉब्लम थिला कि एठी कोन थिला हमरो 25 लाख इंडियन सोल्जर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्ल्ड वॉर एंड प्रॉब्लम कोन लागी ब्रिटिश गॉट ड्रेन्ड तांगर कोन इकोनॉमिक क्राइसिस चालू होगला दे वर हेवीली इंडेप्टेड बुझी परछ वॉर माने वॉर इंडेप्टनिटी बढ़ी गला तापरे मेनी ऑफ द कोन राइजिंग चैलेंजेस कोन थिला ए टाइम रे अमेरिका रो राइस असली एतला अमेरिका पर जर्मन्स को स्टन कर देतला विद द शूटिंग ऑफ कोन सबमरीन्स है ना तापरे ए टाइम रे अंटार्कटिक ट्रीटी आस जेतला कोन अंटार्कटिक ट्रीटी कोन गोतला जे भी कॉलोनी अछि दे कैन बी फ्रीड एंड दे कैन हैव देयर ओन सेल्फ रूल ए सब फैक्टर्स ए टाइम रे जन नवक स्टार्ट करतला मेन फैक्टर ला इकोनॉमिक सिक्योरिटी जोटा कि ब्रिटिश दे थिंक दैट तांको पाकर नाइ के वॉर से माने दे आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द वॉर आ आसीबो कोड खर्च आसीबो कोड सेटा प्रॉब्लम राइट तापरे मु जदी सेकंड मु सेकंड ये को जीबी ओके सेकंड को जीबी 1942 रे कोन आसला 1942 रे कोन क्विट इंडिया मूवमेंट हेतला क्विट इंडिया मूवमेंट रे कोन हेतला अंग्रेज भारत छोड़ो मतलब ऑलमोस्ट काइंड एडा मु कोइ परी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पार्ट 2 कोइ परी बेटा I mean, people were fed up of their माने तमे कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस दबो तमे सेल्फ रूल रे प्रॉमिस दोचो कि सेटा तमे करूनो तमे कहउचो कि तमे कहउचो कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 परे तमे कोन दबो इंडियन डोमिनियन गोटे दबो बट पीपल वेर फेड अप ऑफ दैट तापर आ गोटे कथा कोनती कोन क्रिप्स मिशन हमें पढू क्रिप्स मिशन वाज अ फेलियर राइट क्रिप्स मिशन वाज अ फेलियर बट प्रॉब्लम है कि आई डोंट थिंक इट वाज अ फेलियर एट्टी आउर बिल्ड अप हेगला कोन जोटा कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जोटा अचीव होनी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जोटा तुम फ्रीडम अचीव करि परिबोनी नाउ यू विल गो फॉर द मास मोबिलाइजेशन जोटा कि एठी भी होतला माने एठी कोन ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हेगला बिटवीन इंडियन लीडर्स एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इट इज ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हेगला दैट वाज द क्रिप्स मिशन वाज नॉट अ फेलियर बट हां इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द फ्रीडम मूवमेंट एटा मु भी कहि परिबी बिकॉज़ ऑब्वियसली तमे टेबल रे बसलो तार किछ हल मिललानी तो यू वेंट फॉर द अदर तो एटा गोटे कैटलिस्ट फॉर ऐड हेगला आ फोर्थ रे कोन स्टार्ट हेगला इंडियन नेशनल आर्मी तांकर ट्रायल स्टार्ट हेतला
इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल स्टार्ट है 1945 रे बुझे पार एंड एंड एटा की एग्जीक्यूटिव किए करता ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी काहे कि मन अछि आ भितरे गुरबाज सिंह धिलन हे गला तापरे पीके सहगल हे गला आउट नेम थिला कि शाहनवाज खान है ना सिख हिंदू मुस्लिम they were they were going and they were taken to trials at the red fort rango trials hotla eti kon hindu muslim sikh unity pole asila how can you do that बुझी पारे एडी समस्त पार्टी को सपोर्ट पळे आसीबो 1945 रो इंडियन नेशनल आर्मी जो ट्रायल स्टार्ट हैला दैट वाज वन ऑफ द ट्रिगरिंग मोमेंट्स काई होतला तापरे 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 फिफ्थ बुक कहि परे रॉयल इंडियन एयर फोर्स बुझी पारे रॉयल इंडियन एयर फोर्स से प्रॉब्लम थिला कि यस सेम ट्रीटमेंट काहे कि तुमको तुमको सेमता कमिशनिंग रैंक्स मिल नथला तुमको मिनियल जॉब से रखा जाउतला प्लस तुमको से हैंड जॉब्स माने तुमको सफासफी कर्म पे रखा होतला एंड हाँ तुमको कमिशन कर नथले तुमरो सैलरी बहुत कम थिला तुमरो तुमरो मेस फैसिलिटीज बहुत खराब थिला तो एठी बडा म्यूटिनी स्टार्ट हेगला तापरे तापरे द लास्ट फाइनल इन कॉफिन व्हाट कोना एटा द नेवल म्यूटिनी इन 1946 के बाजो नेवल रेटिंग्स कोन थे लाइक मुके परिबी हमर सब ह्यूमन्स तांको ताको तांको कोन सब नेवल रेटिंग्स ही कोन थे माने जे तळया पोस्ट रे थिले तांको नेवल रेटिंग कोन थे तांकर भी सेम हालत थिला रॉयल इंडियन एयर फोर्स रे तांको भी ठीक से खाया देउ नथिले तांको दिन ठीक से माने ट्रीट भी कर नथिले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलतला तो दिस मोमेंट वाज तो से टाइम रे जो इंडियन नेवी थिला दे स्टार्टेड म्यूटनी है ना काहे कि कराची रे भी हैला वाइजाग रे भी हैला बॉम्बे रे हैला अराउंड 20 सबस्टेशंस एंड मोर देन 100 शिप्स से माने म्यूटनी कर देले अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ए सब कल्मिनेटिंग फैक्टर्स सकासे ब्रिटिश रो एग्जिट हेला ऑब्वियसली हमु जतल कोंती नॉन वायलेंस थ्रू रे अचीव हेची दैट्स बिट अ वेक स्टेटमेंट हाउ कैन समवन अचीव इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंस बुझी पाछो एटा एबे भी पॉसिबल नो सेबे भी पॉसिबल नो बट हाँ एते सब फैक्टर्स अछि नॉन वायलेंस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स बट ए फैक्टर को हम इग्नोर भी कर परिया म्यूटिनी तमे जानिचो हम जो तीनटा पिलर अछि यदि यदि मिलिटरी कंट्रोल यदि हरै दबो ब्रिटिश से रूल करि परिबो दिस मिलिटरी कंट्रोल कम्स अंडर दिस वन मिलिटरी दे ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरी कंट्रोल बुझी पाछो तम तमरा सोल्जर्स मरुचन दे वॉर रे एयरफोर्स तुमको साथ दोनी they have they are trying to killing the British officers ସେମାନେ କଣ ମାନେ ମାନେ ଜାହାଜରୁ ସେମାନେ କଣ सी को फोपाड़ दोतले ब्रिटिश ऑफिसर्स को फोपाड़ दोतले एम द केसेस ओडा हेच से टाइम रे के बार इकोनॉमिक ड्रेन आउट हेगलानी तमर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मान नांती तमर क्रिप्स मिशन फेल हला क्विट इंडिया मूवमेंट तम अगेंस्ट पळा आसिला के बार जो तुम ग्रेजुअल रूल जो कहउथल दबली सेटा तुम देई पलनी राइट तो एटा सब कोन आउरी बहुत मिस्ट्रेस बढ़ी गला तापरे कोन आसला हमरो माने हम जो क्लेमेंट एटली थिला से कहिले कि प्राइम मिनिस्टर कहउथले कि हमें जून 1948 रे तुमको कोन दे देबो तुमको ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस दे देबो बट हां बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल राइट्स पंजाब एंड वेस्ट बंगाल जो पार्टीशन प्लान थिला तेरा ठीक से हे पर नथिला ठीक बात पंजाब जस्ट इमेजिन पंजाब रे केते पांचटा नदी अछि पंजाब कोनते तार डिविजन करया पे एते प्रॉब्लम हैला भाबिलो वेस्ट बंगाल जो डिविजन करले द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड ताको केते प्रॉब्लम हेतबो तो ए सब प्रॉब्लम दे हैला बेलकू राइट्स बढ़ी गला तो दे पोस्टपोन इट टू अगस्त 1947 they told that just get the hell out of that blasted place सेति पे सेमे जल्दी इंडिपेंडेंस दे देले एते राइट्स लार्ज स्केल राइट्स हैला रावलपिंडी मैसेकर जानथबो बुझी पालो रावलपिंडी more than 1000 of Sikh women were raped same जिनसो हमरा ईस्ट बंगाल रे होतला बुझी पालो तो these were the factors ना which was the last nail in the coffin of British colonial aspirations तो फैक्टर्स अछि हमको टिके कोन टिके पॉइंट्स हिसाब लिखिया पड़ियो जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन अ बिट सब जिनस तो सेया लिखिबे बट के माने कोन यू हैव टू ऐड सम मसाला राइट एनीवेज let's I think I've already given you many of the points so I will move on to the next question so the third question हमें क्वेश्चन तो नहीं बट हाँ फ्लड्स इन इंडिया causing impacts
mitigation and measures एबे इंडिया रे कोन चलची फ्लड प्रॉब्लम चलची राइट despite having problem है कि El Nino warning सत्ते भी एथर एते फ्लड आसिला केमिति दैट वाज द मेन प्रॉब्लम मुझे पारजो ऑब्वियसली टोरेंशियल रेन्स होची या 5 दिन रेन जति दिन रे हेई जाउची then that can cause an severe impact right and सेटा एथर हेज right floods माने कोन जदि काली को जदि क्वेश्चन आसी what are the floods what are the causes what are the impacts what are the mitigation what are the measures at least what a definite answer तो अछि ना floods are natural disasters that occur when a large amount of water submerged normally dry ground India is highly vulnerable to floods in which Assam, Bihar, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal are largely affected because it is getting affected right now है ना last year floods रे कोन हेतला जम्मू एंड कश्मीर पंजाब रे तबाही मचे देथिले माने इंडिया को गेट खोलिया को पड़ला लास्ट को इंदर से जहां जते को सब गेट अछि सलाल डैम तो नेकी जेना पर जो डैम अछि सब खोलिया को पड़ला एंड इंडिया तो तबाही हैला लास्ट को पाकिस्तान रे भी तबाही हैला लास्ट ईयर रेट है एंड एथरो ए टाइम रे भी होउची तो गुड लेट अस एग्जामिन व्हाट आर द कॉजेस why and देखो why floods are why are floods increasing है ना गोटे जिनस देखो there are main reasons there are two reasons गोटे हला natural और गोटे हला anthropogenic reasons हला ओके गोटे जिनस हला कि आमे जानि छु डू यू नो heavy monsoon rainfall काहा कोनते as per the IMD more than 64 to 125 millimeter of rainfall ताको heavy rainfall कोनते and more than 125 हेले extreme heavy rainfall कोन एटा around heavy rainfall कोन right IMD and this will last around for a day one day and area कहते 20 to 30 square kilometer as per the IMD बुझी पारतो heavy rainfall केबे extreme heavy rainfall केबे but हां हमें जानि जदि आ extreme जदि हे गेला ना गला तापरे आ तळे less than 64 कोन लाइट रेन तार क्लासिफिकेशन ऑलरेडी देछि ठीक है IMD वेबसाइट देखि दो जल तो मैं व्हेन यू आर राइटिंग सम आंसर्स ना लिखि दो साइड रे यू कैन मेंशन सम पॉइंट्स एक्सट्रीम रेनफॉल केते हेवी रेनफॉल केते स्टेट पॉइंट्स कहेंगे बाद में सेडा सही जिंस को नहीं कि तो मैं आंसर लिखिबो बुझि पार तो हेवी मॉनसूनल रेनफॉल देखो एडा हला इंडिया रे राइट नाउ हम ओडिसा रे हला ओडिसा रे एवरेज रेनफॉल हला एथर जो आछि मोर देन 200 मिलीमीटर बुझी पार मोर देन एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल कटक हम जो पूरी रे पूरी हेगला कटक रे हेगला कटक रे 225 मिलीमीटर रेनफॉल एंड पूरी रे मोर देन 300 मिलीमीटर रेनफॉल रेकॉर्ड हेछि लास्ट मंथ रे माने एई मंथ रे भी हेछि लास्ट मंथ रे भी रेकॉर्ड हेछि फ्लड्स काई आस्टे तार भी रीजंस अछि आउ गोटे जिनस वाला ए जिनस तो मैं लिखि पारिबो साटिस काई कि महानदी रे फ्लड्स होछि काई कि बैतरणी रे फ्लड्स होछि तार सब रीजंस अछि राइट तापर गोटे जिनस वाला नेक्स्ट हला क्लाउड बस्ट व्हाई क्लाउड बस्ट रे डेफिनेशन कोन 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल क्लाउड बस्ट कोन कोछि as per the IMDb 100 millimeter of rainfall within 1 hour within 10 square kilometer range गोटे जिनस क्लाउड बस्ट केतल हुए केतल बुझे भाई क्लाउड बस्ट केतल जेतले तो हवा को ओरोग्राफिक लिफ्ट मिले राइट देखो गोटे जिनस होला कि हमर एटी वैली एरिया से वैली माने कोन प्लेन एरिया से कटक जेम देला एटी ओरोग्राफ माने क्लाउड बस्ट हुए नहीं क्लाउड बस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द कोन ज्योग्राफी जदि सेमिते थबो सपोज एटी पहाड़ी एरिया थबो देन व्हाट जेमिते हम साइकिल चलाउछु पहाड़ी रे ऑब्वियसली वी हैव टू गो इन दैट वे सेमिते हवा भी सेमिते जीवो राइट क्लाउड बस्ट होउछ काई at that time this is called orographic lift right and एडी को adiabatic cooling भी होय adiabatic cooling काहे obviously when the air gets lifted up it releases its own energy आमे कोन जंचु जतले air जतले warm थाए ना precipitation होय नहीं तर humidity capacity बेसी थाए किंतु air जतले cool थाए ना precipitation हे जाय and एटी कोन accumulations of lots of clouds बहुत सारा क्लाउड्स एडी accumulate हे जाय प्लस ये तारो एडी प्रेशर बहुत कम थाए प्रेशर एडी बेसी थाए
pressure rate बहुत कम था, temperature it will lose, then it will lead to heavy cloud तापरे moist heavy cloud तापरे एटा cloud burst हे जिवो which lead to the माने कोन precipitation condensation to be in fact एठी गोटे जगह रे एमती कंडेंसेशन हे जो सपोज 10 स्क्वायर किलोमीटर रेंज रे बर्स्ट हेगला ता माने ए जगहटा पूरा फ्लडिंग हे जिवो बुझी पाछो 100 मिलीमीटर रेनफॉल गोटे जगह जदि माने विद इन 1 आवर जदि बर्स्ट हे जाउछ ना तो ए पॉइंट्स तुम लिखिबो साइड रे लिखिबो तो इट कैन अफेक्ट अ लॉट माने सेटी पूरा से जगह ही बुडी जिवो आम आईएमडी कोन कोए 125 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल होल डे 24 आवर्स एटा भाबिला 100 millimeter in 1 hour. Imagine the कोन imagine the intensity of the rainfall. So तमे करि परिबन right. So cloud burst is a major problem in Uttarakhand, Himachal Pradesh. Right. तापरे cyclones मु तुम कोन डिस्कस करियो cyclones होची हम ओडिसा इज prone to cyclones. एप्रिल मे और cyclone हुए बहुत एटी कमी जाय छी एंड अक्टोबर cyclone हुए एंड साइक्लोन रे किछि फैक्टर्स तुमको लिखिया पड़िबो साइक्लोन काई होची द अपवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द एयर होची जोडी लो प्रेशर बिल्ट होची स्मॉल सेंटेंस तुम तको एक्सप्लेन करि परिबो सो दिस इज why the floods are getting increased काई सी ऑब्वियसली जेतो साइक्लोन आसु ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी आउ जोडी रिवर जते थबो सेठी से रिवर भी मॉइस्चर कलेक्ट करिवो देन एका संग से बरसे दबो as soon as it gets cut off from the moist surfaces the hard surface जेतो से हिट करिवो it will automatically drain out the all the water बुझी पर तापरे स्नो मेल्ट गोटे प्रॉब्लम अछि इंडिया रे काई की स्नो ऑब्वियसली स्नो मेल्ट सकासे तो माने आजिका डेट रे कोन ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुए गोटे कथा कहबी व्हाई देयर इज ए कोन अछि सिक्किम 2023 रे ग्लेशियल आउटबर्स्ट हेतला राइट काई हेतला स्नो मेल्ट करे ना जो स्नो रिट्रीट करे ना स्नो कमी जीवो स्नो जदी कमी जीवो ग्लेशियर लेक रो एरिया बढ़ी जीवो ती जानि छ काई पानी सेटे अक्युमुलेट हबो एंड एटा हो जे कोठी अराउंड 18000 फीट या 17000 फीट सिक्किम रे प्रॉब्लम थला कि लेक जोनार्स कोई परबी है ना तमे कोई परबी तिस्ता रिवर भी कोई परबो है ना सेठी माने कोन ग्लेशियल आउटबर्स्ट हेगला तुम भाबो 18000 फीट रु and it is coming near to around 5000 feet तुम भाबो एटा 6 किलोमीटर हाइट रे अछि इस अराउंड 2 किलोमीटर हाइट अछि को लागुनी पानी रो बेग बहुत फास्ट हेके आस्तबो ग्लेशियल आउटबर्स्ट इज वन ऑफ द रीजंस फ्लडिंग होछि सेडा हुए सेडा सिक्किम रे हुए लास्ट 2020 लास्ट ईयर भी हेतला एते एरिया 6 किलोमीटर हाइट रु गोटे 1 किलोमीटर 5 तापर तो ऑब्वियसली लैंड एरिया का आसीबो 1 किलोमीटर हाइट को जदी पडुची बहुत वेगर पडुची देन इट कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर एटा ही हेतला एंड हमें मोर मन अछि चुंगथांग डैम जोटा अछि अराउंड 1200 मेगावाट पावर से जनरेट करतला इट वाज कंप्लीटली बस्ट ऑफ नथला से जगह बुझी पाछो जे सिक्किम जाइथबे से जानथबे आ विषय बुझी पाछो गोटे डैम को नष्ट कर दे तो स्नो मेल्ट होची मतलब ग्लेशियल जैसे ग्लेशियल एरिया बढ़ुची है ना बुझी ग्लेशियल रिवर जो एरिया बढ़ुची ना तो ये सब जिनस प्रॉब्लम होए बुझी पाछो तापरे आ गोटे हला कि सिल्टेशन ऑफ द रिवर्स राइट सिल्टेशन ऑफ द रिवर सिल्टेशन ऑफ द रिवर देखो गोटे जिनस लागे this will I will connect with the dam problem dam ना सिल्टेशन ऑफ रिवर्स माने कोन स्टोन्स हेगला ग्रेवल्स हेगला बड़ बड़ पत्थर हेगला when it gets accumulated at the river bed है ना हिमालय रु आछी कोन गंगा जाउची and it get एडी कोन सिल्टेशन ही जाउची या बहुत बड़ बड़ ग्रेवल्स फॉर्म ही जाउची ता माने कोन river carrying capacity is getting decreased the river's carrying capacity is getting decreased ता माने कोन you are prone to flooding so right now brahmaputra कोन कोचे ब्रह्मपुत्र इज हेवीली फ्लडेड ब्रह्मपुत्र एमिति आछी प्रॉब्लम विथ ब्रह्मपुत्र माने असम कोन छ एटा नागालैंड हेगला है ना एटा नागालैंड हेगला तापर एटा मणिपुर हेगला है ना एपड अरुणाचल प्रदेश अछि दीज आर वेरी हिली एरियाज
these are very hilly areas बुझी पारो एंड एथर प्रॉब्लम कोन है नागालैंड रे बहुत वर्षा है more than 200 millimeter of rainfall in a single day and सेटा कोन एटी ट्रिब्यूटरी जाउची so they have contribute एटी जो ब्रह्मपुत्र जाउची एटी आसाम रो माने नागालैंड रे बहुत सारा ट्रिब्यूटरी अछि एंड एटी बहुत पानी आसी गला सेति पे आसाम बुडी गला आसाम रे बेसी वर्षा है नागालैंड रे बुझी पारो आ गोटे प्रॉब्लम ब्रह्मपुत्र जाउची ना तांकर मेन प्रॉब्लम सिल्टेशन गोटे रिपोर्ट बाहरला मोर देन 4.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ब्रह्मपुत्र एरिया हैव बीन हेवीली सिल्टेड बुझी पारछो एटा एटा माने हिमालय रो रिपोर्ट बाहरला और ब्रह्मपुत्र रिपोर्ट बाहरला जस्ट राइट क्वेश्चन ई पॉइंट्स में ऐड करि पारि एमिति नै कि द एग्जामिनर गोइंग टू चेक ओके एतिक स्क्वायर किलोमीटर हेतला ही वोंट चेक से जानि हम आईडिया अछि हेवीली सिल्टेड हेतला ब्रह्मपुत्र जो रीजन अछि ना एटा पूरा हेवीली सिल्टेड हेतला ता माने आरो कैरिंग कैपेसिटी कमी जाय छै बुझी पारछो गोटे जिंस लागि इफ द कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस बुझी पारछो आ आमे कोन जानिचो आमे कोन जानिचो रिवर आसे आमे कोन बड़ बड़ डैम्स बनै दियो बड़ बड़ डैम्स बनै दियो हला तो रिवर आसे बड़ बड़ डैम्स बनै दियो डैम्स रे प्रॉब्लम हला कि सेडी पे डैम्स रे भी सिल्टेशन हुए बुझी पारछो डैम्स रे भी हेवी सिल्टेशन हुए तो सेटा गोटे प्रॉब्लम थला हमें जो भाकरा नंगल डैम थला भाकरा नंगल डैम हला तारो 26% सिल्टेशन हे जाय माने माने कोन कैरिंग कैपेसिटी सॉरी जाय भाकरा नंगल डैम रो गोटे जिंस देखो तो डैम ऊपर लिखिबो ना तुम दीडा जिंस तुम मेंशन करि परियो गोटेला कि लिविंग स्टोरेज आ गोटेला डेड स्टोरेज यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट हैला डेड स्टोरेज रे कोन सिल्ट रहे एंड इंडिया रे कोनदी फॉर द बेटर इंजीनियरिंग है ना कोन कोनदी 10 to 15% सिल्ट पय रखंती सिल्ट रखंती एंड एबे रिपोर्ट आछि more than 60 to 70% of the dams in India heavily silted है जाए 15% से लिमिट क्रॉस कर देछि 15% लिमिट क्रॉस कर देछि जोटे डेड स्टोरेज होछि से जो सिल्ट रहे कथा अत्यधिक सिल्ट रहउछि सपोज आर 90 माने माने सपोज एटा 100% अछि तो इंजीनियर चाहबे कि हां एटा 20% 20 to 30% सिल्ट हे जाओ बाकी ता ऊपर कोन वाटरटा रहिबो राइट वाटर रहिबो बट प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम डैम जो सिल्ट अछि ना फुल हे गलानी फुल हे के आसुची तार परसेंटेज हे गला मोर देन कोन 50 10 to 15% बुझी पर माने तुम एति भाबतो एटी डेड स्टोरेज सिल्टेशन फिल अप हे जाउची इंडियन डैम्स रे तापर भाबला एटी वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी रहिबो कि भाकरा नंगल डैम जो रिपोर्ट आसला तार आगुर कैपेसिटी थला 5842 बिलियन क्यूबिक मीटर थिला इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4500 बिलियन क्यूबिक मीटर माने लिविंग स्टोरेज तर स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीज हेगलानी सेम गोस फॉर व्हाट सेम गोस फॉर हीराकुद रे 25% सिल्ट जमी गलानी माने जदि 25% सिल्ट जमी गलानी माने मु कहि परिबी इनडायरेक्टली 25% ऑफ कोन कैपेसिटी हैज बीन डिक्रीज्ड कैपेसिटी डिक्रीज होई हेगलानी बुझी पाछो सपोज हीराकुद कैपेसिटी सपोज 6000 एमसीएम है ना 25% केते होची केते भी होची बुझी पाछो तार 25% से फुल हे गलानी माने से केते फिल करिवो बहुत कम फिल करिवो यदि डैम रो कैपेसिटी यदि कम हे जाउची देन फ्लड गेट्स बेसी ओपन हबो देन इट विल ओपन द फ्लड गेट्स बुझी पाछो आई नो देखो प्रॉब्लम कोन आछो यू विल राइट ऑल दिस मिलियन पॉइंट्स माने छोट मोट पॉइंट्स अछि बट यू राइट ऑल दिस पॉइंट्स ना लिविंग स्टोरेज कोन डेड स्टोरेज तुम टिके निजे रिसर्च करो इफ यू रिसर्च योर ओन ना तुम जानि परियो तुम लिखि पर कोन अछि दैट्स व्हाई मु ए सब जिंस तुम को है ना ए नंबर तुमको ठीक से लिखिबार नहीं और हारारी नंबर तो लिखि परिबो एबे कोन डैम्स एक्ट अछि 2021 डैम्स एक्ट अछि वी हैव मोर देन 6000 डैम्स तुम जानि 291 डैम्स अछि ब्रिटिश एरा रो दे नीड्स इमीडिएट रिस्टोरेशन काहे हेवी सिल्टेशन हे जाय छै चेनाब डैम रे प्रॉब्लम हला कि हेवी सिल्टिंग काहे कि इन दिस वाटर आछि heavily flowing in this water बुझी पारो तो आउ सिल्टेशन हेले तमरो हाइड्रो पावर रो कैपेसिटी भी कमी जिवो बुझी पारो एई सब पॉइंट्स तुम एटे लिखि पारिबो चाहिले तुमे हां तुम एमति लिख दो साइक्लोन लिख दो स्नोमेल्ट लिख दो सिचुएशन ऑफ रिवर्स लिख दो डिफोरेस्टेशन गोटे जिंस थिला कि जेतो सिल्टेशन होछ ना तुमे
कौन ड्रेजिंग एक्टिविटी बढ़ाती ना गोटे जिनस कि जो तुम सिल्टेशन कौन करते ड्रेजिंग करते शिप ड्रेजिंग हुए खोदती ताकि सो दैट तुम मिट्टी निकाल पार इंडियन कौन इनलैंड वाटर वाटर हाईवेज ऑफ इंडिया है इनलैंड वाटर हाईवेज ऑफ इंडिया सी कौन करती 2.5 मीटर ड्रेजिंग करती है ड्रेजिंग करते 2.5 मीटर से हिसाब से जिते सिल्ट काढ़ी पारे कहीं ऑब्वियसली कौन बोट जीव रिवर से हिसाब से सिल्ट काढ़ीदेव गोटे रिपोर्ट थिला 2019 रे ब्रह्मपुत्र रिवर रे 19 मिलियन टन ऑफ सिल्ट डिपोजिट सिल्ट डिपोजिट एट द सेम टाइम 19 मिलियन टन जो सिल्ट डिपोजिट ड्रेजिंग थ्रू रे तुम मैक्सिमम 50,000 सिल्ट तुम बाहर करि परिबो मैक्सिमम 50,000 सिल्ट तो ड्रेजिंग इज नॉट एन गुड ऑप्शन फॉर सिल्टिंग फॉर द रिमूवल ऑफ सिल्ट कहीं एटा कॉस्ट इफेक्टिव नुह बहुत पैसा लगे ड्रेजिंग कोड हुए सी रे हुए कहीं चैनल्स तुम ड्रेजिंग कले बड़ बड़ शिप एंट्री मारी पारिबो तो आ सेम ड्रेजिंग तुम जदी रिवर तुम यूज करछो दैट मींस कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ी जिवो तुम चाहे हीराकुद हैज मोर देन 550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तुम केते ड्रेजिंग करिवो सिल्ट को रिमूव करे तो तार आउट सॉल्यूशन कोन हला if you upper catchment area रे तमे जदी देखुछ देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अपर कैचमेंट एरिया कोन जदी हम अफोरेस्टेशन करूछ है ना ऑब्वियसली अपर कैचमेंट एरिया रो आछि ना जदी महानदी जदी ओडिसा रो लोअर कैचमेंट कोइ परबी छत्तीसगढ़ से अपर कैचमेंट एरिया फॉर महानदी जो तुम सेडी अफोरेस्टेशन करूछ सेडी तुम ठीक से ड्रेजिंग करि दोछ बाकी सब जिंस बेसी करिवार नै है ना तमे सेटिकार माने सेठी तुम जिते माने पैसा खर्च करछ दैट कैन रिड्यूस अ लॉट तापर हम जानछो क्लाइमेट चेंज सेमिति भी प्रॉब्लम होउछे तापर आउ कोन होछे एनक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्रिंट्स है ना नदी रे पाथ रे जिबार अछि बट तमे सेठी होटल बनै के रखछो देन नदी जीवो कोठी लास्ट से होटल को उड़े दो डिफोरेस्टेशन राइट ऑब्वियसली आई मीन दिस पेड आई मीन कोन वेटलैंड्स deforestation of wetland destruction एटा भी गोटे पॉइंट आस परिबो दिस ट्रीज वेटलैंड्स आर द नेचुरल बैरियर्स फॉर द फ्लड्स होई परिबी एरोशन सेड होइनी आ तांकरो ट्रीज रो सॉइल रो जो कैरिंग कैपेसिटी थाए सेडा भी बहुत थाए से माने पानी अब्जॉर्ब करंती बट सेडा ही तुम काटी देलो माने कोन फ्लड्स आसीबो तापर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम हला कि तमे ता भितरे ठीक ठाक कोन ड्रेन्स देई परिबोनी प्लान्ड अर्बनाइजेशन तुम ड्रेन दे देलो हम जानछो पानी एति कैसे पानी एति जो तुम अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन तुम ड्रेन रो लेंथ केता हबो विड्थ केता हबो ता भीतर जदी सिल्टिंग हे गेल देन दैट विल कॉज अ हेवी प्रॉब्लम तापर पोर ड्रेनेज सेम जिंस होली क्लाइमेट चेंज इन इंक्रीजिंग एक्सट्रीम रेनफॉल 15 दिन तळे कहतले कि एलिनो आसीबो एलिनो आसीची बट हां व्हाटएवर द रेनफॉल वी आर सीइंग ना सपोज ऑन एन एवरेज 5 दिन रो रेन माने 15 दिन रो रेनफॉल जदि तुमको 5 दिन रो मिल जाउछ ना 5 डेज रो जदि मिल जाउछ ना दैट इज अ सीरियस क्लाइमेट चेंज तुम भावनी कि वर्षा होनी क्लाइमेट चेंज एडा भी होई परिबो 15 डेज रो रेन 5 दिन रो मिल गला दैट इज अ क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम समझ रहे हो एनीवेज मु तुमको माने आई ट्राइड टू सिंप्लीफाई थिंग्स माने मोर इंटेंशन थिला कि आई वांटेड टू वैल्यू ऐड most of the points value addition कहतली so that you can write a bit differently so मु मोर करैछि so let's see like the session so cause the floods it is already देई देथली but हाँ problems of recurring list कोन अछि एटा देखि दियो dredging has been yeah एटी कोन थिला dredging एटा देखो dredging has been undertaken in many Indian rivers unsuccessfully as the catchment area has not been taken गंगा रे भी ड्रेजिंग हेछि जो लुना रिवर जो ओडिसा रे जो लुना रिवर अछि सेठी कोन हेतला ड्रेजिंग कले एम्बैंकमेंट साइड रे सिल्ट रख देले नेक्स्ट टाइम फ्लड आसी से सिल्ट भी नहीं गला कैरिंग कैपेसिटी कमी गला एंड ड्राई एरिया से फ्लड आसी गला लुना द रिवर इन ओडिसा अंडरवेंट dredging from March 2012 to 2014 but as the silt was left on the embankment it came back again ब्रह्मपुत्र माने ब्रह्मपुत्र हे गला या हम हीराकुद हैला ना ड्रेजिंग इज अनवायबल ह्यूज कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर समझ रहे हो एनीवेज so I have given you I mean वो टिके दे देली कहीं फ्लड्स होउची
है ना नेक्स्ट टाइम इफ आई कम देन मु महानदी रो फ्लड्स ऊपर डिस्कस करबी केम कोन हेचे है ना तो if you really like the session then subscribe and हाँ the test series are going on ये सब चलची and optional subject चलची please check the description good night